So namaskar all of you. So aji ame amara test 1 jota mains 2023 test series ro test 1 ro second part discussion kariba. Next panchta question number 6 to question number 10. So 6 question do, in what ways did the maritime trade of ancient Odisha influence its cultural exchanges? So maritime trade of ancient Odisha influence its cultural exchanges, religious practices and artistic developments. Okay, आरि ऊपर आपण फोकस करिकी आंसर दबार अछि. Okay, so दी लाइन रो इंट्रोडक्शन गोटे देबे. एटा जेतु 10 मार्क रो क्वेश्चन 7 मिनिट रे सारिवार अछि आपण. Okay, small introduction of 2 lines ki Odisha or Kalinga has been known as a country of seafarers. ठीक अछि. सेमती गोटे आपण 1 लाइन की 2 लाइन रो इंट्रोडक्शन दे परिबे. एबे सेई जो मैरीटाइम कनेक्शंस गुडा to different places like Bali, okay, Borneo, Sumatra, तो सेई सब जगह को it influenced our culture, religious practices and artistic developments. Okay, तो सबुरो 2-3 पॉइंट हमें दे परिबे. So you start with cultural exchange. Okay, तो कल्चरल एक्सचेंज रे कौन कौन पॉइंट्स हमें दे परिबा. तो प्रथमतः हैला कि हमर जो कल्चरल एक्सचेंज रहिला, हमर जो ट्रेड लिंक रहिला, जेमति हमें जावा हैला, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो. ओके, ताहले हमें देखु छु शेयर्ड ट्रेडिशंस, ओके, फूड, to an extent even languages. Okay, so interaction with Southeast Asia. Interaction with Southeast Asia. ताकू टिके 1 लाइन एक्सप्लेनेशन हमें दे परिबा. को टर्म्स रे इटा होची. So in terms of culture, cultural exchange हैला, food, ओके, तो अपन देखिए खाइबा रे भी अपन देखिए बहुत गुडे स्पेशली इंडोनेशियन फूड वेरी क्लोज टू इंडियन फूड. ओके, ओडिया फूड रो भी अपन किछि कॉमनलिटीज पाइबे. ओके, आ तापरे लैंग्वेजेस भी. ओके, तो एटा हमर फर्स्ट पॉइंट कल्चरल एक्सचेंज अंडर रे interaction with Southeast Asia. Next point हमें cultural exchange अंडर रे कौन दे परिबा. So हमर जो इंडियन नॉलेज ता अछि, हमर कल्चर ता अछि, सेटा स्प्रेड हेछि. कलिंगर कल्चर ता स्प्रेड हेछि, इंडिया रा कल्चर ता स्प्रेड हेछि. Okay, if you see that in major airports of Thailand and Indonesia, आपण सेठी रामायण रो, ओके, आउ बहुत गुडे हमर इंडियन प्लेस हैला कि आपनकर कल्चर हैला बहुत बड़ आकार रे से माने ताकू रखि छ. ओके, सो स्प्रेड ऑफ इंडियन नॉलेज. एथरे कौन कौन पॉइंट्स हमें दे परिबा स्प्रेड ऑफ इंडियन नॉलेज रे. सो टेक्स्ट हे गला, स्क्रिप्ट हे गला, आर्ट फॉर्म्स हे गला. एगुडा में दे परिबा. तपरे थर्ड पॉइंट अंडर कल्चरल एक्सचेंजेस आउ कोन हमें दे परिबा. आमे जेमती इन्फ्लुएंस्ड आम जिनसरु आम देशर नॉलेज रु से माने इन्फ्लुएंस रहिचंती, सेमती आमे भी इन्फ्लुएंस रहिचु सेटु. सो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस.
सो तांको देशर भी कल्चर हैला फूड हैला सेगुड़ा आमे भी इम्बाइब कलु ओके सो सेटा से पॉइंट भी आमे ऐड करि परिबा तो एगुड़ा गला कल्चरल एक्सचेंज नेक्स्ट कोन पचारला क्वेश्चन में तीनटा जिंस पचार ओके फर्स्ट पचारला कल्चरल एक्सचेंज तापर रिलीजियस प्रैक्टिस और थर्ड हैला आर्टिस्टिक डेवलपमेंट सो रिलीजियस प्रैक्टिस ऊपर किछटा हमें पॉइंट्स दे परिबा as you can see in the question एटा कल्चरल एक्सचेंज वाला नेक्स्ट रिलीजियस प्रैक्टिस तो रिलीजियस प्रैक्टिस जदि मु जेमते कहली कि अपन देखिबे सेठी although those countries are primarily now they may not be Hindu countries okay for example Indonesia world रो सबुटु बड़ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री okay सेमती थाईलैंड घरिका भी देखिले they are not Hindu countries as the Buddhism and other religions are there but अपन जदि देखिबे ताहले बहुत कॉमन commonalities आपण पाइबे with Ramayana with Mahabharata and all okay plus Buddhism रो भी सेतरे बहुत important role रही so number 1 spread of Buddhism spread of Buddhism तापरे integration of Hindu deities ओके तो बहुत हिंदू डिटीज विष्णु कर जते अवतार अछंती आपण देखिबे अलगा टाइप रे रिप्रेजेंट कराइची इंडोनेशिया रे आउ इवन इन थाईलैंड ओके सो इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू डिटीज सेटा सेकंड पॉइंट हमें दे परिबा इनफैक्ट तांकर जो स्टेट एयरलाइन अछि इंडोनेशिया रो गरुड़ा इंटरनेशनल ओके सेटा विष्णु को पान ऊपर रही गरुड़ा राइट सो से माने कोन करछन ना दे हैव separated their practicing religion with okay or from their cultural lineage ठीक अछि तेणु बहुत जगह आम देखु जोटि की ए प्रोब्लेम्स गुड़ा रोची बट सेठी although it is the world's largest Muslim population इंडोनेशिया रे सेठी किंतु अपन देखिबे कि सेठी lots of ancient temples are there जोटि की विष्णु को पूजा होची एंड इन वेरियस फॉर्म्स तांको जेते अवतार अछि तांकर पूजा होची इंटीग्रेशन ऑफ हिंदू डेटीज आउ कोन पॉइंट हम दे परिबा रिलीजियस प्रैक्टिसेस अंडर रे तो सेलिब्रेशन ऑफ रिचुअल्स ओके देयर आर सर्टेन रिचुअल्स जेंति कि हमर एटी बोइतो बंधना होची ओके जोते कि आपण को सी फेयरिंग ट्रेडिशंस आउ ट्रेड हेरिटेज को हमें सेलिब्रेट करू ओके सो ritual celebrations example the boito bandhana okay तो एटा गला रिलीजियस प्रैक्टिस ऑलरेडी हमरो 7 मिनिट रे सारिया कथा किंतु तीनटा एस्पेक्ट देछि एटलीस्ट तो तीन तीनटा पॉइंट लिखबा सबतरे थर्ड एस्पेक्ट आपन देछि कोन आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स कोन इच ओके सो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स if we see here artistic developments ताको इठी लिखि परिबा तीनटा पॉइंट फर्स्ट हला टेंपल आर्किटेक्चर many temples if you find in Southeast Asia they have been influenced by the Indian temple architecture especially the South Indian temple architecture काहे ना South Indian kingdom सुडा थिला चोलास गरिका से माने रूल करथि बहुत बड़ जगह रे आउ
इधर से माने डायरेक्टली किंबा तांको संगरे जो लोकल डायनेस्टीज माने टच रे आसिले से माने सी टाइप रो टेंपल्स बनेले. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू कैम्बोडिया, ठीक अछि, तो सेठी कैम्बोडियन टेंपल्स, ओके, ता भीतर आपण पाइबे कि साउथ इंडियन टेंपल्स टाइप रो टेंपल कंस्ट्रक्शन बहुत गुड़े बड़ बड़ टेंपल्स से आपण पाइबे. ओके, अंकोर वाट कॉम्प्लेक्स हे गला. ओके, तो that has taken a lot of inspiration from your South Indian temple architecture. है सो टेम्पल आर्किटेक्चर फर्स्ट पॉइंट है. आउ कौन क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स, ठीक अच्छे, क्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स भितर एथरे हमर मैरिटाइम ट्रेड जोटा है. ओके, हमर आर्ट एपटू यदि पट्टचित्र हो गला ओडिसा रो, ओके, तो सेगुड़ा भी सेठी क्वाइट फेमस है गला. सो क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स. सेकेंड है क्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स. और थर्ड पॉइंट है द मैरिटाइम मोटिव्स. ओके, तो ओडिसा रो लेगेसी अछि जो मैरिटाइम थीम्स अछि, ओशनिक थीम्स अछि, सेटा भी हमें लिखि परिबा. सो मैरिटाइम मोटिव्स. तो 9 पॉइंट है, तीनटा एस्पेक्ट कही नौटा पॉइंट केबे भी 7 मिनिट रे लिखिबा डिफिकल्ट, बट स्टिल देन आमे 9 जानले ता भितर 5टा कि 7टा लिखि परिबा. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, राइट. आउ जो मॉडल आंसर आपनकर दिया आइछि ऐप रे, सेतरे इटा 186 वर्ड्स रो आंसर दिया आइछि. 150 वर्ड होबा कथा, 186 वर्ड्स रो आंसर अछि. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ ଟା ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଆଉଥରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 300 ୱାର୍ଡ କରିଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ସେଇଟା ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବନି. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ ଟା ବି ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖନ୍ତୁ. ଓକେ, ସୋ ଏଟା ହେଲା କ୍वेଶ୍ଚନ नंबर 6. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7. टेस्ट 1 रो क्वेश्चन नंबर 7. तो एटा आपनकर ancient dance forms ru apanakar aschi. Okay, it is from ancient dance forms. So this is the question number 7. How do the Ashtanayika concept and its depiction in classical Indian dance form reflect cultural and emotional nuances of ancient Indian society? Hello. प्रथमे अष्टनायिका कॉन्सेप्ट ऊपर किछि लिखिबा. इंडियन डांस फॉर्म में जो अष्टनायिका फॉर्म टा यूज होची, ओके, हाउ इट इज रिफ्लेक्टिंग कल्चरल एंड इमोशनल nuances of ancient Indian society. Okay, so अष्टनायिका ऊपर आपण किछिटा लिखिबे. व्हाट इज अष्टनायिका? ओके, सो यू नो दैट ताथरे टिके टेक्निकल पॉइंट्स आपण लिखिया पे पड़ियो. ओके, अष्टनायिका एक्चुअली कोन? सेटा हमर नाट्य शास्त्र रो गोटे पार्ट. आ अष्टनायिका रे नायिका कोन? दैट इज heroine in that way. Ashtanayika means 8 emotional states, okay, of a heroine. 8टा इमोशनल स्टेट्स ऊपर से फोकस करूछ. ओके, सो फर्स्ट आसिला कल्चरल सिग्निफिकेंस. How it reflects the cultural and emotional nuances. So cultural significance भितरे आपण फर्स्ट पॉइंट देबे. तो तार सिग्निफिकेंस कौन? 2 लाइन ता ऊपर लिख परिबे. रोल इन नाट्य शास्त्र.
So नाट्य शास्त्र रे basically 8 emotional, okay, states of a heroine. So that shows the societal view on relationships. Okay, so 8 emotional aspects of a heroine. Heroine generally এটা গোটে romantic heroine in love. ঠিক আছে? So it shows you the societal aspect of relationships. Okay, এটা first point রইলা cultural significance of, okay, अष्टनायिका. तापरे ଆଉ କଣ କଣ cultural significance ଅଛି ତାର? So it tells you about the shakti or the power of, okay, the woman. So symbol of feminine experience. Symbol of feminine experience. Okay, तो इंडियन सोसाइटी रे वुमन कर तांको रोल कौन थिला, what were their desires, okay, केमती सोसाइटी दा कंट्रोल करथिला, okay, their agency in ancient Indian society सेटा से देखो. Okay, तो cultural significance. तापर आसिला कौन ना depiction in dance. Dance रे केमती ताको आपण रिप्रेजेंट करथिले. Depiction in classical Indian dance. So depiction in dance under रे अष्टनायिका concept जदि हम देखिबा ताले first it relates to the expression of rasa, right? तो जोड़ा जेमती कि ओडिसी हे गला कि भारतनाट्यम हे गला, ओके, तो सेतरे अभिनय किंबा एक्सप्रेशन रो बहुत इंपोर्टेंस अछि. ओके, सो एक्सप्रेशन ऑफ रस, तो डांस रे इटा गोटे तार इंपोर्टेंट सिग्निफिकेंस. तापर नेक्स्ट पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ पोएट्री जेमती कि हमर गीत गोविंद, ओके, ओडिसा रे किंबा बाहरु जदि भी हम देखिबा कालिदासंकर थीम्स हे गला. ठीक अछि. सो पोएट्री which is intertwined with dance, so integration of poetry. Second point, integration of poetry. How depiction in dance रे how कोन points दे परिबा. So another thing is various regions एथरे contribute करछन. कथक, मणिपुरी सेथरे भी आपण देखिबे they have also contributed. So cultural versatility, अष्टनायिका concept. Okay, so cultural versatility. Okay, तो एटा हला depiction in dance. तो आमे देखिदेलु कोन ना dance classical Indian dance रे तार depiction कोन. ओके, cultural nuances ता देखिदेलु. एबे रहि गला हमर emotional nuances. ठीक अछि.
So next, इमोशनल nuances। तो जो 8टा इमोशंस, ओके, 8 इमोशंस ताको रिप्रेजेंट करूची। आउ कोन एठी हमें दे परिबा कि सोशल रिफ्लेक्शंस, ओके, ह्यूमन इमोशंस, राइट। सो सोशल रिफ्लेक्शंस, तापरे आउ कोन कोन हमें लिख परिबा। सो these various human emotions, जो 8टी इमोशन है, that has inspired different form of artistic, okay, you can say contributions, like painting से गला, temple carving से गला, textile है गला, okay, so artistic inspiration। and finally यदि हमें देखिबा, there is a spiritual connection also, okay, जे तांकर आराध्य जे जहां को प्रे करा होछ, मे बी लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिव, okay, so it blends romance and spirituality, so the spiritual connection blends romance and spirituality। ठीक अछि, एटा हला आपनकर क्वेश्चन नंबर 7। तो एति गोटे जिनस मन रखंतु 7 मिनिट्स रे सारिबार अछि। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ईच क्वेश्चन पे 7 मिनिट। तेणु आम पाखे 9-10टा पॉइंट थिले, ता भितर हमें 6टा कि 7टा पॉइंट लिखि परिबा, जोटा कि 7 मिनिट रे पॉसिबल हो। 9टा पॉइंट तो केबे भी पॉसिबल होबनी कि टू राइट इट इन 7 मिनिट्स। तो फर्स्ट क्लास रे मु कहितली आपनकर स्पीड टा 20 to 25 वर्ड्स पर मिनिट भितर होबा दरकार। ओके, जिते प्रैक्टिस करिवे सेते सेटा पढिबे। तो आपनकर जो मॉडल आंसर दिया आइची, से मॉडल आंसर रे एटा 195 वर्ड्स रो आंसर अछि। टिके अधिका ही जो 150 रे होबा कथा, 170 भितर फाइन, बट 195 वर्ड्स एटा आइची बिकॉज़ बहुत ही डाइवर्स पॉइंट्स आपन को दबा पे पड़िबो ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, so now let us come to question number 8। तो एटा मार्शल आर्ट्स ऊपर अछि। दिस इज अबाउट इंडियन मार्शल आर्ट ट्रेडिशंस। How do Kalaripayattu and Silambam embody the philosophical and cultural ethos of their regions of origin? So एगुड़ा मार्शल आर्ट्स, इंडियन मार्शल आर्ट्स रो ता ऊपर क्वेश्चन पचारछि कोन, हाउ do they embody the philosophical and cultural ethos of their regions of origin? तो दीटा फर्स्ट फिलोसॉफिकल इथोस हमको देखिया पड़िबो और कल्चरल इथोस दीटा याको देखिया पे पड़िबो। ओके, सो फर्स्ट फिलोसॉफिकल इथोस को आसीबे। ठीक अछि, सो Kalaripayattu, you know, that is one of the most famous native martial arts of Kerala। ठीक अछि, आउ Silambam mainly relates to Tamil Nadu। ठीक अछि, सो origin ऊपर आपन को लिखिबार अछि। सो Kalaripayattu केरला, ठीक अछि,
ଆଉ ତା ଫିଲୋସଫି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ ସୋ physical, mental ଆଉ spiritual harmony. Okay. So spiritual, physical and mental harmony and related to Ayurveda excuse me and yoga. Okay. ठीक सेमती सिलंबम ओके तार फिलोसॉफिकल जदि आमे एथोस टा देबा ताले तमिलनाडु रे डेवलप हेची ओके and it focuses on things like self discipline, self defense, okay, and respect for nature and respect for your opposition जहाँ against आपण फाइट टा करछन तो सेही पॉइंट्स उडा आपण लिखि पारे ओके सो सिलंबम that is Tamil Nadu এটা গলা তার philosophical then you come to the cultural ethos okay the cultural ethos the cultural representation ଆମେ କହି परिबा so प्रथमतः ହେଲା regional identity गोटे केरलार हेरिटेज को देखौछि आ गोटे आपनकर द्रविडियन कल्चर को देखौछि तमिलनाडु राइट सो रीजनल आइडेंटिटी ओके कलर टू सेतरे बेसिकली आपनकर टेंपल रिलेटेड रिचुअल्स अछि जेमति कि कलरी पूजा ओके सो टेंपल रिलेटेड रिचुअल्स ओके कलरी टू रे तापरे सिलंबम रे सेतरे फोक ट्रेडिशंस आउ ट्राइबल कॉम्बैट टेक्निक्स रोच फोक ट्रेडिशंस एंड ट्राइबल कॉम्बैट टेक्निक्स ओके तो इटा गला आपनकर कल्चरल रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट यू कम टू टेक्निक्स कौन वेपन्स वेपन्स यूज होची सेतरे ठीक है तो टेक्निक्स भितरे तो फर्स्ट हला वेपन्स कौन यूज हुए व्हाट आर द वेपन्स दैट आर यूज सो कलरी पैट रे आपन को सोर्ड्स यूज करचंती शील्ड्स यूज करचंती एंड bare hand techniques भी यूज हुए विदाउट वेपन्स भी हुए ओके आउ silambam which basically means this bamboo okay bamboo staff माने आपनकर बाउंसर ओके बड़ बड़ स्पीयर्स टाइप रो के स्टाफ ऑफ बैम्बू से तरह से मैंने कॉम्बैट करन राइट तापरे नेक्स्ट आ गोटे इंपोर्टेंट जिंस कोन दिटार कि दे इट टीचेस स्पिरिचुअल डिसिप्लिन ओके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन तापरे next they also emphasize a lot on traditional healing means the healing of mind and the healing of the body so traditional healing through ayurveda and yoga
आउ कौन पॉइंट्स दे परिबे एथरे जे डिमांड अछि क्वेश्चन रो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स इज निज निज रीजन रो कल्चर को एटा प्रिजर्व करूची सो कल्चरल प्रिजर्वेशन ओके कल्चरल प्रिजर्वेशन तो 170 वर्ड्स अपन जो मॉडल आंसर दिया है ऐप रे that is 170 words okay that is your question number 8 now let us come to question number 9 तो এটা मार्शल आर्ट्स ओके रिलेटेड थिला तापरे क्वेश्चन 9 टा अछि आपनको थिएटर ओके थिएटर रिलेटेड अछि तो जो डिटेल्ड सिलेबस टा आपण पाई जिबे आपनकर ऐप रे से हिसाब रे आपण सब टेस्ट पे प्रिपेयर करिवे along with the detailed syllabus कि माइक्रो सिलेबस जोटा आपण कहउछ क्वेश्चन 9 को आसंतु what role did regional theatre traditions play in socio-political landscape of India during colonial rule okay socio-political landscape social and political both during colonial rule तेणु ब्रिटिश पीरियड रे थिएटर मूवमेंट रो कंट्रीब्यूशन कोन थिला ठीक अछि सो आउ किछि एग्जांपल्स भी एतरे दे परिबे तो फर्स्ट ताकर मेन काम कोन थिला इंडिया रो जो कल्चरल आइडेंटिटी ताकू प्रिजर्व करिवे नेशनलिज्म को प्रिजर्व करिवे आउ ताकू मासेस को केमती पहुंचेबे ओके सो फर्स्ट कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म एठी हमें किछि एग्जांपल्स भी हमको दो पे पडिबो अधिका मार्क्स पाए पे ओके सो फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन तो ता अंडर रे कौन लिखिबा में प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन अंडर रे सो फॉर एग्जांपल यात्रा ऑफ बंगाल एंड इवन ओडिशा तमाशा ऑफ महाराष्ट्र ओके एगुडा सब आपनकर लोकल ट्रेडिशन को प्रिजर्व कले ठीक है सो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन किछि एग्जांपल्स आपण दे परिबे तापरे नेशनलिस्ट थीम्स जोड़ा कि अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स कौन से मन सब लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट से करथिले वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्र ओके जोड़ा कि से इंडिगो प्लांटर्स माने जो एक्सप्लॉइट करथिले लोक मानन को कॉमन लोक फार्मर्स मानन को ओके तारी ऊपर थिला सो नेशनलिस्ट थीम्स ओके एग्जांपल नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्र ठीक है तो एटा गला आपनकर कल्चरल आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म तापरे आउ कौन कौन काम थिला थिएटर रो सोशल रिफॉर्म ओके सोशल रिफॉर्म
Next, social reform. Okay, so ଯେମିତି କି questions of inequality, so addressing inequality. So addressing inequality or they were against inequality. Examples सब जगह में मिल जिवो किछटा prominent examples अपन नहीं परिवे. Okay, like Bhavai in Gujarat and Yakshagana in Karnataka. ଆଉ कौन social reform रे हमें लिख परिवे. So there are secret meetings. ये जो theater रा ये रे, okay, just in the garb of theater, secret meetings, okay, to mobilize people against the British सेगुड़ा भी होतला. So secret meetings. ଆଉ कौन points हमें दे परिवे social reforms रे. So local languages रे ही होतला. तेणु अधिका लोक सेटा एक्सेस करि परुथिले. ठीक अछि, ग्रास रूट लेवल कनेक्शन टा हैला. So local languages. Number 3. How say social reform under रे how कौन लिख परिवा. Now there was cultural revival. Okay, जोड़ा पुराना traditions थिला ताकू आउतरे okay लोकों के सामने रे माने आनले. Right. So cultural revival. Okay, एगोड़ा वाला अपन को social reforms under. Right. तापरे कौन से political आउ social कोची. Right. So political awareness केमती मैंने पढ़ेले through the theater. So next point हमें लिखिबा political awareness. Political awareness रे resistance movements जो गुड़ा चाली ची जोड़ा आगुरु थिला से माने केमती successful हेले etc. So resistance movements. Okay, so information about various resistance movements सेटा theater रु दिया होतला. Right. तापरे आउ कौन कौन एथरे political awareness रे अपन कहि परिबे. So ये जो आगुरु भी जो points गुड़ा में लिखतिलु secret meeting, local language, cultural revival एगुड़ा भी अपन एथरे दे परिबे. Okay, so total हमें लिखिबा जदी 167 words आपनकर मॉडल आंसर रे एटा दिया हिची ऐप रे. सो जेटा हमरो 150 भीतर रहबा कथा पाखा बाकी ठीक अछि सेटा. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 थिएटर. ओके, तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 10 टा हमें पपेट्री ऊपर. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 is related to puppetry. दीटा puppetry styles रो difference है पचर. कौन कौन ना प्रथमे shadow puppetry और गोटे हैला rod puppetry. तो different parts of India रे ए दीटा style रो puppetry. Okay, कौन तारा differences रोच. How do the techniques and themes of shadow puppetry different from those of rod puppetry? Shadow puppetry होचंती गोटे स्क्रीन थिबो. ठीक अछि, तो shadow टा पडुथिबो
दैट इज शैडो पपेट्री रॉड पपेट्री जोड़ा फिल्म्स रे अपन देखछन स्ट्रिंग्स की रॉड ओके ऊपर जाने के धरी की से पपेट रो मोशन टा ओके डायरेक्ट करथिबो ठीक अछि से पचरछ को टेक्निक्स पचरछ आउ थीम्स पचरछ टेक्निक्स आउ थीम्स रे डिफरेंस अपन को बाहर करियार अछि रॉड पपेट्री रो आउ शैडो पपेट्री हैला techniques and themes both you have to of shadow puppetry and rod puppetry okay तो कौन पॉइंट्स हमें दबा इटरे तो फर्स्ट आसिला टेक्निक्स okay first go to techniques so first shadow puppetry sp हमें लिख परिबा shadow puppetry रे कोन रहउची so सेतरे कोन होउची ना it uses translucent leather puppets against a lit screen okay screen पछरे आपनकर लाइट रो सोर्स अछि राइट तो सेतरे कोन ना एज अ रिजल्ट आपनकर कलरफुल शैडोस आसुची राइट सो मैनिपुलेशन ऑफ लाइट दैट इज वेरी इंपोर्टेंट शैडो पपेट्री रे मैनिपुलेशन ऑफ लाइट अंति बहुत प्रकार रो रीजनल आपनकर पपेट्री स्टाइल अछि ओके जेमति की एग्जांपल थोलू बोमालता ऑफ आंध्र प्रदेश रॉड पपेट्री जदि हमें देखिबा पहले as you can understand okay so these rods mounted rods okay these are basically controlled from below okay proper handling of the rods is required proper movement ପାଇଁ okay like the putul nach in West Bengal putul nach of West Bengal तो एवढे वाला था टेक्निक्स तापर आसिला थीम्स कौन कौन थीम्स से माने यूज करंती सो शैडो पपेट्री रे प्राय जो थीम्स गुड़ा यूज करा हुए से गुड़ा आपनकर ग्रेट एपिक्स रु जनरली निया हेता रामायण महाभारत okay and related to spiritual and moral lessons okay आउ रॉड पपेट्री रे जदि हमें देखिबा तार जो थीम्स गुड़ा अछि बहुत गुडे डाइवर्स थीम्स थाए बट मेनली लोकल थीम्स ऊपर एडा थाए लोकल फोक टेल्स हे गला सोशल इश्यूज हे गला ओके localized stories mostly okay so कौन पचारछि हमको टेक्निक्स पचारला थीम्स पचारला ओके तापरे आउ कोन हम दे परियो आउ किछि तरह इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें दे परिबा ओके फॉर एग्जांपल द रीजनल आइडेंटिटी regional identity okay so shadow puppetry जदि हमें देखिबा mainly prominent in South India okay rod puppetry South India mainly prominent okay सबुटी मिलिबो mainly prominent in South India ठीक सेमती शैडो पपेट्री जदि हमें देखिबा ताले
मेनली ईस्टर्न इंडिया रे एटा पॉपुलर ठीक अछि सॉरी उल्टा कहि देली मु शैडो पपेट्री इज इन साउथ इंडिया एंड रॉड पपेट्री टा आपनकर ईस्टर्न इंडिया आउ कोन पॉइंट्स हम एथरे ऐड करि परिबा म्यूजिक जो म्यूजिकल इन्फ्लुएंस थाए तो शैडो पपेट्री रे कोन क्लासिकल म्यूजिक यूज हुए ओके आउ रॉड पपेट्री रे आपनकर फोक म्यूजिक जनरली यूज हुए ओके तो म्यूजिक रे शैडो पपेट्री क्लासिकल म्यूजिक एंड रॉड पपेट्री इज फोक आउ कोन पॉइंट्स हम दे परिबा ओके तो हाउ दे इंटरैक्ट विथ द ऑडियंस इंटरेक्शन ओके तो ऑडियंस इंटरेक्शन जो देखिबा ताले रॉड पपेट्री रे मोर डायरेक्ट एंगेजमेंट ओके रॉड पपेट्री रे जेतु से तरह बेसिकली आपनकर लोकल ओके वेरिएंट्स रो थाए सो रॉड पपेट्री डायरेक्ट इंटरेक्शन आउ जोड़ा कि शैडो पपेट्री जेतु सेटा क्लासिकल म्यूजिक यूज करे तो सेतरे यू नो इट इज तार सब स्कोप टा फिक्स्ड ही थाए ओके कोन हबो केमती हबो और बिकॉज से गुड़ा सब रामायण की महाभारत कि सेमती किछि गोटे फिक्स स्टोरी ऊपर थाए ओके ऑन द अदर हैंड आपनकर जेतु रॉड पपेट्री टा सेटा फोक ट्रेडिशंस ऊपर थाए लोकल ट्रेडिशंस ऊपर थाए तो सेटा टिके बेसी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुए लोकों संगे बुझी पाले तो जहाँ जहाँ पचार क्वेश्चन रे all the parts we have properly okay justified in the answer so एटा हला हमरो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 थर्ड पार्ट रे हमें सेक्शन बी को जिबा माने 250 वर्ड किबा जोडा 15 मार्क क्वेश्चन सेठी की जिबा सेटा भी दीटा सेशन रे हमें करिवा क्वेश्चन नंबर 11 to 15 and 16 to 20 सेकंड टेस्ट आपनकर एई पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर ऊपर सेटा 29 तारिख रे शेड्यूल्ड अछि सो बिफोर दैट वी विल बी फिनिशिंग द डिस्कशन ऑफ टेस्ट 1 ओके तो जो माने भी लेखि की पठेई चंती आपनकर करेक्शन ऑलरेडी हे कि आपन को मिली सरची तो जो पॉइंट्स उडा सेतरे दिया हेची सेटा देखिबे प्लस मॉडल आंसर टा देखिबे ताले आपन प्रॉपर्ली नेक्स्ट टेस्ट रे आपन आंसर टा दे परिबे ओके so then we will stop here